or something that has been made in Japan. Now, I think it is incumbent upon us to shed this conservative mindset कि हमें फिर से वो सेल्स टैक्स का क्या कह रहे थे सर आप पर स्क्वायर फुट वाला टैक्स हटाओ हाँ हटाएंगे कोई बात नहीं वो अलग बात है बट मैं क्या कह रहा हूं थोड़ा दूरंदेश की बात चले तो अच्छा है आई थिंक वी कैनॉट बी क्लोजेटेड वी कैनॉट बी confined to this thinking कि मुझे महाराष्ट्र के साथ compete करना है मेरी बिजनेस उस बिजनेस के साथ केरल के साथ करना है या तमिलनाडु के साथ या आंध्र के साथ करना है नो आई थिंक प्लीज स्टार्ट थिंकिंग ग्लोबल एटलीस्ट नेक्स्ट जेन को थोड़ा बाहर एक्सपोजर दिलाइए एक्सपोजर विजिट्स कांट बी अबाउट वन मीटिंग एंड देन गोइंग अराउंड एंड टूरिज्म देख के इधर उधर 4 फोटो लेके वापस है वैसे नहीं आई थिंक यू रियली हैव टू टेक आवर नेक्स्ट जेन यंगस्टर्स the FTCCI young team to actually visit some of these world-class companies and focus on making sure they come back inspired and do something truly outstanding. Because, the gentleman from SBI is here and he'll tell you, capital is not a constraint anymore. अगर आपके पास idea है, अगर आपके पास दिमाग है और आपकी product में दम है, capital तो आज कहीं से आ सकता है. एक shining example है हमारे गोपी यहाँ पे, अनिल चलमल शेट्टी. Let me tell you his story. He's a friend, so I know. Anil was also a software employee in London till 2010, I think. 9, 10? 9 or 10. His parents are doctors, so they actually gave him good education. But he's a first-gen entrepreneur. 2009-10 में उन्होंने अपनी कंपनी लंदन में चालू किया, जिसका नाम उन्होंने ग्रीन कंपनी ग्रीन को करके डाल दिया. आज Anil is one of the largest renewable energy producers in the world, not India. So even our guys can do it. And how did he raise his capital? He has institutional investors, GIC, the Singapore government company. He has Adia, he has a lot of others, institutional investors. So if he can do it, I'm sure there are many of us here who can also do it, who can also dream big. Likewise, let me also tell you, today, not only raising a capital, but also the governments across the country, be it the central government or the state government. Today we understand you better than what we understood you 30 years ago. 30 साल पहले जब एक IAS officer principal secretary होता था या commissioner of industries होता था, he used to sit in an ivory tower and you had to go and beg with them. वो license राज में आपको याद होगा, पैरवी करना पड़ता था. आज नहीं है. Today in fact we are coming to you, we are pushing you. Jayesh Ranjan is on his WhatsApp I think almost 24/7. आप सभी के मेरे को जहां तक जानकारी है मैं तो ये समझता हूं कि इस ऑडियंस में से कम 80% लोगों के पास जयेश का फोन नंबर होगा. He is that accessible. Governments are that accessible to you. I mean, this was never the case in the past. The entry barriers have lowered. It has become easy to do business. Today, a state like Telangana tells you, if you want to start a new factory in my state, you don't need a permission because आपको ये सुन के ताजुब होगी. You'll be surprised listening to this. About 8 years ago, when Jayesh was Commissioner of Industries, I was not the Minister of Industry then. There was somebody else. The Honorable Chief Minister KCR Garu took a review. So as part of the review, he simply asked one question to the Special Chief Secretary Pradeep Chandra, who was the man who was looking after industries then, and to Jayesh, who was the Commissioner of Industries then. And I also see Ajay Mishra ji here. Hi, sir. So he asked one simple question. KCR Garu asked one simple question. He said, why should the government give any clearance to industry? Government को industry को clearance देना क्या जरूरी है? क्यों हम लोग ये 3 महीने, 6 महीने क्यों लगाते हैं इसमें और क्यों industry को permission देने की क्या जरूरत है? एक IAS officer जिसने 15 साल, 20 साल, 25 साल सर्विस में बिताया, उसको एक नया चीफ मिनिस्टर उसके सामने बैठ के पूछता है कि परमिशन देने की क्या जरूरत है, तो जयेश और प्रदीप एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे कि अभी क्या बोलना है, अब जरूरत क्या है कोई पूछ रहे हैं. तो देन आई थिंक दे रिकवर्ड एंड दे सेड, सर अगर कोई एक्सीडेंट हो गया कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो होगी, वरना परमिशन नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कौन कर रहा है क्या कर रहा है. देन सीएम सर सेड, ओके लेट्स डू वन थिंग, जैसे हम लोग राइट टू एजुकेशन किए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, लेट अस मेक राइट टू सेल्फ सर्टिफिकेशन अ चॉइस ऑफ द इन्वेस्टर. अगर वो डिक्लेयर करते हैं कि आई एम गोइंग टू बी अ लॉ अबाइडिंग इंडस्ट्री, लॉ अबाइडिंग इंस्टीट्यूशन, देन लेट अस टेक इट एट फेस वैल्यू, सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउ कर दो. साथ ही साथ, बिकॉज यू सेड वी नीड कंप्लायंस, वी नीड इंफॉर्मेशन,
Let them also submit something online so that we have a record, we do good bookkeeping, and we decide कि कौन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. This kind of disruption and innovation in policy is what Telangana has indulged in over the last 9 years consistently. Not only in industrial policy in TS IPAS. 15 दिन में अगर परमिशन दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो 16वां दिन ऑटोमेटिक अप्रूवल है. कोई हिंदुस्तान की कोई राज आपको नहीं बताती है. और जयेश जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट को भी आज 1000 रुपये का फाइन लग सकता है अगर आपका फाइल उसने 16वां दिन या 17 दिन अगर उन्होंने होल्ड किया हुआ है, तो he can be fined a sum of rupees 1000 per day. This is by statute, by legislation. No Indian state will tell you this. And most importantly, not just in industrial policy, even our building permissions today. All building permissions, again in the same model. 21 days, we promise all clearances. If we don't deliver, 22nd day, it's a deemed approval. No state in India will tell you this. These are the disruptions our Honorable Chief Minister brought. That's why today, if somebody asks me, what is this Telangana model that you gloat about, brag about? I only say 4 things. It's holistic, integrated, it is inclusive, and most importantly, it's balanced. What do I mean? What I mean is, today Telangana, when I said Dr. Y.S. Rajshekhar Reddy and Chandrababu Naidu, and the contrast between the two of them, and how Telangana is an amalgamation of the best in both. The reason why I say that is because we are less than 3% of India's population. But today, when National Panchayati Awards and National Municipality Awards are declared by Government of India, this state with less than 3% wins 30% of the awards. No other Indian state has been able to accomplish that kind of feat. We are only 2.5% of India in population, but we contribute to 5% of India's GDP. Literally, we are a 50-kilo boxer fighting in 100-kilo category, punching double our weight. Not many states in India can claim that. Most importantly,